हेलो, नमस्ते, सलाम एंड हमारे शो के अंदर जिसका नाम है रियलिटी विद मोहसिन सिद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत सारे एपिसोड हुए डिफरेंट टॉपिक्स पे। आज हम लोग बहुत ही यूनिक चीज लेके आपके सामने आ रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोग बताएंगे और वो सारी चीजें आप सभी हमारे सारे व्यूअर्स को हर एक पहलू के अंदर हेल्प करेगा, जिसके अंदर जब भी वो लोग रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में जाते हैं वो सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग उस पर फोकस ध्यान से सुनना, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या कभी भी कोई भी चीज हो, यू कैन ऑलवेज कॉल अस, कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। Hello viewers, welcome back to another episode, and we have Mohsin, my name is Sid, and we have Mr. Sunil Singh, he's from Home Life Maple Leaf. He's Hello, our expert today, and we're going to talk about commercial. But before going into commercial transaction or commercial realty, we're going to talk about the market. The season is changing, as you can see, spring is coming, and do you have any like glass? अगर हम लोग देखो रियल एस्टेट मार्केट की तरफ हम लोग ध्यान करें तो लास्ट ईयर जो चीज चल रही थी और इस साल जनवरी से मार्च के जो स्टैटिस्टिक्स है, जो ट्रैप के स्टैटिस्टिक्स, हम लोग उसकी और अगर एक नजर करें तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लास्ट ईयर वी हैव सीन अ क्रेजी मार्केट इनटू मार्च 2017। उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट के चेंजेस आए, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा पूरे मार्केट के ऊपर, और उसके बाद चीजें जाके जब सेटल डाउन हुई जनवरी से हम लोग फिर एक पॉजिटिविटी हम लोग मार्केट में देख रहे हैं। अगर हम लोग नंबर ऑफ सेल्स देखें तो नंबर ऑफ सेल्स थोड़े डाउन हुए डेफिनेटली, लेकिन प्राइजेस स्टार्टेड पिकिंग अप अगेन। अगर जनवरी से फरवरी का हम लोग कंपैरिजन देखें तो there is a minimum of 4 to 5% raise into the actual price of houses. कॉन्डोमिनियम मार्केट देखें, कॉन्डोमिनियम मार्केट के अंदर बहुत सारा उछाल आया है। हम लोग देखें अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20% रेज इनटू द कॉन्डो प्राइसेस। तो अगर मैं आपको रियल फिगर्स की बात करूं तो अगर हम लोग डिटैच हाउसेस देखें, जनवरी के अंदर वी हैड 1653 सेल्स इनटू द मार्केट, but as compared to January, if you look at the statistics from January to March, it raises from 1653 to 3822. और उसके सामने हम टोटल नंबर ऑफ लिस्टिंग्स देखें, we can also see a positive change into total number of listings. Yes, the listings are there in the market. There's a lot of new listings now. Exactly. And as he rightly said, we are right at the 1 year mark when the last year craziness was happening. You were a part of that as well. Yes. You would like to say something about what happened last year? Yeah, there is a highway, 401, we have 400. Right. The thing is, sometimes there are traffic because of accidents. The speed of car reduces. Right. It's still a highway, and on an average, you always maintain 80 to 100. Right. So sometimes cars run at 100 km per hour. किसी टाइम पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी होती है। So, but when you look at an average, because real estate is all about averages. So it's not like you buy a property today and you sell it tomorrow. Okay. You keep it for 5 years, 6 years, 7 years. So 7-8 years average, you always look at around 5 to 10%. But yes, if you're buying a property for immediate return, that's something I won't recommend. Right. Real estate is a long-term thing, and वहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका होल्डिंग पावर जिसका ज्यादा है, they'll definitely go ahead and make very good money in real estate investment. Yeah. So see, if you look at the today's scenario, there are so many buyers looking for a house. Exactly. Yeah. Plus, we have so many sellers who want to sell the property, Right. whether it's a pre-construction which is almost ready and they will have possession, they want to sell it, some can't. So the question is about qualifying. Right. Does a buyer qualify himself to buy a property? Right, and any seller who want to sell a property, it's not like he will be on a road. He want to get into another house. So there is a chain attached to it, but question is about qualifying. So this year, I think it's all, it's all about if a buyer is qualified, either you go to lender A, you go to lender B. And I always, recommend people that in case if it's a tough situation, Right. and even if you get a mortgage which is higher for a year, go for it. ठीक है. Because Yeah. it's not the end of the world. After 1 year, you can always go back to bank and tell them. Correct. You can negotiate. And Yeah. with this, the beginning of the year, we saw the new mortgage policies coming into effect. People have taken a step back and reevaluate their financial situation, and a lot of people have refinanced and gotten into इवन better बैंक्स deals. का भी हम लोग सिचुएशन देखें तो लास्ट ईयर वो सिचुएशन नहीं था जब
5 days का जो कंडीशनल पीरियड हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वो लास्ट ईयर यूज ही नहीं कर रहे थे और अप्रेजल का तो कोई सिचुएशन ही नहीं था। हालांकि दिस ईयर एवरी सिंगल ऑफर के अंदर बैंक मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क फॉर एन अप्रेजल, तो वो सिचुएशन थोड़ा डेफिनेटली चेंज हुआ है। Right. And that has created a positive environment for real estate because now the buyer can do the due diligence, they can get their proper financing, they can satisfy themselves before they buy a house. See, in short, don't compare yourself with last year. Don't compare yourself with the last to last year. Take an average out. Exactly. The normal selling 2 years before used to be people, the realtor used to take maybe 30 days to sell the property. Correct. Right? 40 days. So what you're seeing now is not new. It has already happened. Exactly. But होता ये है ना कि जो हमने कल देखा होता है फिर उसको हम कंपेयर शुरुआत करना शुरू कर देते हैं कि भाई वही चीज अभी होनी चाहिए। सही बात है, सही बात है। But we see a positive thing here as well. In the last couple of, at least last month, Right. the days in market has gone down For sure. for the houses. So the market is heating up, and there is never a bad time to invest in real estate. और वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है अभी, Weather काफी बहुत बढ़िया है। बायर्स और सेलर्स they started entering into the They market. are coming out of their houses and looking at other properties, investment opportunities, and that brings us to the next segment. We are starting a series on commercial real estate, and that's why we have Mr. Sanil Singh with us. Thank you. And we did an episode with him before, and we got a lot of positive feedback from you guys wanting to know more about commercial side of things. So Sanil sahab, aap bataएं कि what are we discussing today? We'll talk about commercial, and thank you very much to all the viewers and you and all the viewers too, because I got emails and plus I got a feedback from you. There were so many people who were looking to get some idea about commercial real estate business, how to invest in the businesses. Because देखिए जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं कोई ना कोई कंट्री से आए हैं, राइट? वहाँ भी वो जॉब करते थे, यहाँ पे आके भी अगर आप जॉब करनी है, सो दे वांट टू बी डू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे आप ये नहीं चाहते कि जैसे अपने बैक होम में इश्यूज हैं कि जो काम कर रहे हैं और सपोज आप कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर है और कल आप रिटायर होते हैं तो आप अपने बच्चों को वो स्किल नहीं दे पाते। करेक्ट राइट। अभी यहाँ पे अगर आपने एक बारी फाउंडेशन दे दी, अपने बच्चों को एक बिजनेस शुरू किया, एक फाउंडेशन हो गई, सो इट विल बी इजी फॉर देम टू दे हैव वन स्टैंडिंग स्टेप, otherwise they are lost, otherwise we'll have same issues what we used to have before. People who have money, they have too much, because I do commercial, I know, I've seen people, they have too much money, they have invested money, and it's not a easy money they earned it, they have learned to take decision. Right. Yeah, and in a commercial investment, what are the things that somebody should look into before getting into a commercial investment? और आपने जैसे बोला कि skill आप pass on नहीं कर सकते हो generation को, so you need something stable out there which is going to make money for you, even when you're not there, even when you're vacationing in Honolulu or some Hawaii or somewhere else, but you still want that money to come in, right? How is that possible? Why commercial? अभी आप देखो जो दाल रोटी है वो तो आप जो काम कर रहे हो उससे भी निकलेगी, लेकिन जो आपकी कैपेसिटी है विच दैट यू कैन डू मच मोर। एक घोड़ा है, उसको बोलोगे 10 किलोमीटर की स्पीड पे दौड़े, वो एक लिमिट तक दौड़ेगा, बाद में उसने 100 की स्पीड पे ही दौड़ना है। सो एट द एंड ऑफ डे यू ऑलवेज हैव इट इनसाइड दैट यस आई कैन वर्क, आई कैन रिकवर माई, और आई कैन पे ऑफ माई बिल्स, दैट एवरीवन डज इट, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कहीं भी आप काम करते हो, लेकिन वो कैपेसिटी और घोड़े की रफ्तार वाली स्पीड अगर आपने पकड़नी है, सो यू हैव टू इन्वेस्ट। अभी रियल एस्टेट एज सच उससे बेटर कुछ नहीं है। वाई? रियल एस्टेट में जो आपने ग्रोथ देखी है, जो उसमें आपको प्रॉफिट है, जो नाम है, जो फेम है, वो आपको किसी जगह नहीं मिलेगा। अगर आप GIC ले लें ना, किसी सर्टिफिकेट ले लें कोई बैंक का, या कोई गोल्ड ले लें, या फिर कोई बॉन्ड ले लें, कनाडा पोस्ट का, किसी का भी, उसकी जो ग्रोथ है कंपेयर टू रियल एस्टेट, you can't compare it at all, right? So at the end of day, skills cannot be passed on. Buy a real estate. अगर आज आप रियल एस्टेट बाई नहीं करोगे तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है उनको, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनके साथ में कंपेयर और उनके साथ में compete करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए सनिल साहब, आपने एक चीज बता दी हमें कि कमर्शियल जो इन्वेस्टमेंट है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और उसका आपने पूरा अच्छी तरह से रिलेशन बताया हमारी लाइफ के साथ, और
कनाडा में बहुत सारा पोटेंशियल है डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का, और उसके अंदर भी कमर्शियल में क्यों, तो वो आपने पूरा बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। एक और सवाल है कि चलो आई एम वेरी मच कन्विंस कि ठीक है मुझे कमर्शियल के अंदर जाना है, मैं आई वांट टू गो अहेड एंड इन्वेस्ट माय मनी, लेकिन कई बार हमें एक क्वेश्चन रहता है कि कमर्शियल इज अ बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, इट्स अ बिगर इन्वेस्टमेंट, यू नीड लॉट ऑफ मनी। मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल आई हैव 200,000 300,000, my capacity is very limited, I have to play among my very limited resources, मैं कैसे मैनेज करूं? तो is it still possible for me to go ahead and invest and invest that much amount of money and make a good profit? See, Mohsin, very good question, because sometime at the back of mind we have business means we need a lot of money, lot of fund. I always tell that when you are investing, the concept of investing is that you use someone else's money. You always put a down payment, but if you go to a bank is ready to lend you a money. Bank is happy to lend you a money. Just imagine if you go to a bank and it gives you a money at 2% interest rate, 3% interest rate. And if you use a credit card, you end up paying 19%. Who on this earth will give you a money on 2, 3, 4% interest rate? So why don't we go to the bank and use that money? It's all in back of mind. Go to bank, say, this is what I want to do. How much money you can lend me? So the question is, we don't go to the bank, right? And people who go, they have learned it and they go again and again, they go again and again, and that's how they succeed. So for example, if I always think that before I used to think, my thinking was that if I buy a property, I should buy near my house. Now thing is, if you want to buy a property in Toronto, in GTA, your return are not that high. Plus the property is going to be expensive. Correct. Why can't you buy a property which is an investment property which is 2 hours, 3 hours far off? Now what happens is, the moment you start going out of circle, the returns are high. Because returns are high, the property value for which you buy is lesser. Correct. Right. उस सिचुएशन में मेरे लिए क्या ये इनकन्वीनियंट नहीं हो जाएगा अगर मैं बहुत दूर जाता हूँ जीटीए से? तो कई बार मुझे लगता है कि यार ठीक है, मैंने 2-3 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूँ, मुझे पूरा मॉर्गेज का जो बैंक का सपोर्ट है वो आप अच्छी तरह से पूरा सपोर्ट, आप भी पूरा सिचुएशन टेक केयर कर लेते हो, लेकिन मेरा एक कंसर्न ये भी रहता है कि यार अगर मैं ब्राम्पटन में रहता हूँ, अगर मैं मिसिसागा में रहता हूँ, तो मुझे बिजनेस जो मिले वो नजदीक में मिले जितना हो सके, तो मैं उस चीज से, वो शैल से बाहर निकलने में थोड़ा मुझे तकलीफ होता है, डिफिकल्ट रहता है मेरे लिए। तो उस सिचुएशन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जहां पे बिजनेस आप अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन यू हैव टू गो आउट ऑफ योर शेल, यू नीड टू ट्रैवल, इट इज लिटिल फार अवे फ्रॉम द जीटीए बट स्टिल इट्स वर्थ। तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे कि अगर प्रॉपर्टीज, अगर बिजनेस है जीटीए से दूर भी है, यू शुड गो अहेड एंड इन्वेस्ट? देखो मोहसिन भाई, कई लोग जो काम करते हैं ना, रहते मिसिसागा में है, ब्रैम्पटन में है, ब्रैम्पटन दे कॉल इट एज अ स्लीपिंग सिटी, बट दे वर्क इन टोरंटो. So if they can live in Brampton and work in Toronto, go on 401, stuck in traffic, 2-3 hours they are stuck in traffic. Every single day. Why you can't go out of GTA and invest it? When you do, suppose for example you buy investment property. So when you buy investment property, it's not that every day you go and switch on plumbing for water and switch on and on and off. No, you don't go there. Exactly. Nowadays, it's all been taken care by itself. You have the good thing about commercial investment is that the property is maintained by the tenant because they are business people, right? They don't want that for small thing they keep bothering the landlord. And coming back to the payments, you get your payment through wire transfer to your account. So you don't go, you go once a month. Exactly. Right? So if it's all in the brain. And if I can buy a property and here and I'm not able to even pay off my debt, what is the use of buying that property? सही बात। देखो वो जो पेंशन फंड जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो लोग पेंशन में से थोड़ा पैसा पे करते हैं एंड एट द एंड ऑफ डे वो जो पूरा पैसा इकट्ठा होता है, दे एंड अप बाइंग ए प्रॉपर्टीज इन डाउनटाउन टोरंटो एट 4%, 4.5% कैप रेट। उसका मतलब क्या है? You can't even pay off the debt. So what they do is they buy property in cash and they look for long-term return. But we can't do it. We can't put 100% cash. Then why we need investment at all? Correct. Well explained, sir. We'll need to take a break. We are all talking about a shift in mindset now. So we'll come back with more after the break. Okay. Thank you.
Are you looking for someone who can turn your dreams into reality? Whether it's real estate buying, selling or investment, Wasiuddin is the first choice of clients because no client or project is big or small for him. With years of experience, Wasi also offering exclusive deals on pre-construction projects and helping hundreds of clients to make their dream come true. So call Wasi at 416-566-3642 or log on to homesbywasi.com. चॉकलेट चिप कुकी अली सिर्फ कुकी दूंगा, चॉकलेट चिप नहीं दूंगा। इसमें तो बहुत सारे चॉकलेट चिप हैं। एक सेकंड देता हूँ, अभी भी बहुत है। अब अली बेचारा क्या करे जब नए बिस्कॉली चॉकलेट चिप कुकी में है बहुत ज्यादा चॉकलेट चिप्स, ऊपर भी चॉकलेट अंदर भी चॉकलेट। आपकी कुकी बिस्कॉली चॉकलेट चिप कुकीज बहुत 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 चॉकलेटी। हर खुशी बिस्कॉनी। An exclusive multi-designer studio specialized in wedding planning services, bridal wear, casual party wear, jewelry, shoes, purses, dupattas, men's and kids clothes. You name it, we have it. Some of the Pakistani designer labels we carry are Zanike, Agha Noor, Sana Safinaz, Anas Abrar, Zainab Chutani, Wahaj Khan, Fatma Khan and many more. Parahan, sheer elegance. We believe in quality service and best price. You can contact 9075 Derry Road West, Unit Number 1, Milton, Ontario. मैं हूं जहांगीर खान, स्क्वाश कोर्ट का चैंपियन, लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का चैंपियन मोहम्मद कामरान हुसैन। मुझे उन पर यकीन है, आप भी करके देखिए। जहांगीर खान और हजारों क्लाइंट्स का चहेता मोहम्मद कामरान हुसैन। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट्स दोनों के लिए ही सही मशवरा, सही फैसला। मकान जिसे आप अपना घर कहने में फख्र महसूस करेंगे। मोहम्मद कामरान हुसैन, 4163185264। This is the world of internet. You have everything on your computer and mobile screen. If you wish to promote your business through internet, especially to perfect target market, then you have just one reliable name, NJ Marketing, offering various marketing solutions like social media marketing, telemarketing, email marketing, search engine optimization, graphic designing, web designing and development, and mobile application development. So call now at 647-824-1485 or email at njmarketing15@gmail.com or log on to njmarketing.ca. रंग वाली भरम वाली न्यूज वाले व्यूज वाले भेल वाले मेल वाले कराची वाले खैबर वाले लाहौर वाले पिंडी वाले इन शॉट पूरे पाकिस्तान वाले $60, ma'am. जब इश्क हद से बढ़ जाए तो तमाम ख्वाहिशें मिलकर सिर्फ एक ख्वाहिश बन जाती हैं। और बेचैन दिल हर पल हर लम्हा रोता है, दीदार को तरसता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, आपके उम्र के कागजात वगैरह तैयार हैं, प्लीज पेमेंट करके ले जाएं। ओके, थैंक यू। और यही मोमिन का दिल अगर किसी की आंख में आंसू देखे तो
सब कुछ भुलाकर सिर्फ अदा करता है। उम्र के बुलावे के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, नेक नियत और रहम दिल ही काफी है। बाकी हम पर छोड़ दें। अलबरका ट्रैवल, निहायत मुनासिब उम्रा पैकेजेस के साथ। 905-232-6566। Hello viewers, welcome back, and we were having a very captivating discussion with Mr. Sarnal Singh and Mohsin about commercial real estate, and we were talking about mindset and shift in mindset and how you can invest in properties not necessarily close to where you live. It's all about money at the end of the day, and if you make money, nothing better than that, right? अभी सिद्ध भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछूं, when you go to a market to buy a small plant, do you go to market to buy a big tree? No. Because if you buy a big tree, there is no room to grow. Exactly. Just for example, if you want to buy, you don't want to buy a dog and bring it because it's already grown. Yeah. Buy a puppy, small, so that you can see it grow. So the problem is sometimes what has happened last 2 years is you should buy the properties when you see it is going down. That's the time you should buy it so that you see it grow. Exactly. Correct. And having said that, a lot of people, they are getting into commercial businesses and all that, but there is a lot of failure out there as well. Yes. So how do you tackle that? How do you see that? See, from a failure, the problem is when it happens, we only see one side of coin. Correct. अगर सपोज मैंने कोई मेरी अपनी फैमिली है, एक फैमिली में मैंने किसी को देखा वो बहुत ग्रो कर रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी उसने ले ली है, घर उसने बड़ा ले लिया है, मुझे लगता है यार ये तो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चलो मैं भी पीछे बड़े बड़े घर ले लेता हूँ. Last 2 years I have seen some of the people, they buy house because the other person is standing on the line. If he is standing making money, I should also do it. So that's the major problem why we fail. So I always recommend that also look onto the other side of the coin. So other side is what? You should be knowledgeable. Because real estate is an industry, it's a business, it's a system, and you can't just run a system by seeing the other person. Exactly. You have to involve yourself. Correct. So people don't want to take knowledge because it's boring and you have to sit and you have to understand. People don't have that much. They don't want to do a hard work, right? Yeah. So that's the major problem, that we forget to see the other side of coin. Yeah. People who are successful, they have also lost, but they have learned. बच्चा अगर छोटा भी होता है ना तो वो गिर गिर के चलता है, बट हम क्या कहते हैं कि चलो भाई हम बिना गिरे ही चले, right? So it doesn't happen that way. So that's basically what works for one may or may not work for the other person. Yes, and you need to have a knowledge. Exactly. Knowledge is key. That's very important. एक और चीज़ है, for example, अगर मुझे business खरीदना है, अगर I'm convinced I have some amount, जैसे आपने explain किया, I'm ready to go ahead and start investing into commercial real estate. अब एक और क्वेश्चन भी मेरे सामने आता है, वो है कि मुझे जाना चाहिए एक बिजनेस जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास सारे फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स है सारे, और जिसके बेस पे आई कैन डिसाइड कि मेरा रेवेन्यू कितना होगा, मेरा नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना होगा, क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे. और एक और बिजनेस है जहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है डेफिनेटली, बट इट्स नॉट अ टर्न के बिजनेस, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. तो ये दो ऑप्शंस अगर मेरे सामने हैं, तो मुझे कौन कौन से फैक्ट्स चेक करना चाहिए जिसके बेस पे आई कैन गो इनटू द राइट डायरेक्शन. सी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा. हम तीनों बैठे हैं, हम तीनों के जो हेयर स्टाइल भी अलग है, राइट, कपड़े पहनने का तरीका अलग है, सो हर एक का प्रोफाइल अलग है. So for each person there is a different profile of business. So first of all you need to understand कि आप किस चीज के साथ में जेल कर सकते हैं. आप ये ना देखें कि अगला बंदा वो कर रहा है मैं भी वो कर लूं. नो, देन यू आर मेकिंग अ रॉन्ग स्टेप. सो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि चाहे मैं बिजनेस लूं, नया शुरू करूं, कोई फ्रेंचाइज लूं, सो आपने हर चीज के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो आपको पता होने चाहिए.
अभी आप देखो जो फ्रेंचाइज सिस्टम है, इट्स अ सिस्टम. Correct. Now what you're going to do is you're going to be part of the system. So you buy into the system first. You buy into system. You pay money for their system because their system is successful. You want to get into it, you pay that much money. So what is happening is you are still working as an employee. Right. Correct. Yeah. So at the end of time, जब 5 साल आपने बिजनेस किया, क्योंकि जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख 2.5 लाख, अगर आप कोई छोटा सा कोई सपोज कोई बर्गर की कोई जॉइंट ले ली, कोई फ्रेंचाइज सिस्टम आपने ले लिया, सो यू आर पेइंग maybe 250,000. It's a new location. पहले आप उसको सजाओगे, उसकी लीज होल्ड इंप्रूवमेंट करोगे, फ्लायरिंग करोगे, मार्केटिंग करोगे, एंड एट द एंड ऑफ डे दैट बिजनेस इज नॉट फॉर यू, बट इट इज गुड टू बी ए पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच इज रनिंग, सो यू अर्न योर लिविंग, you understand the concept. क्योंकि एट द एंड ऑफ डे दो it doesn't belongs to you, but you are operating. So उसमें उसके जो कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू क्या है, उसका जो मटेरियल कॉस्ट उसको आप निकालते हो, यू हैव ए ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सो यू अंडरस्टैंड कि उसमें हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू मैनेज योर इन्वेंट्री, हाउ टू मैनेज योर वेस्ट, बिकॉज फ्रेंचाइज इज ऑल अबाउट अगर कोई फूड इंडस्ट्री है, हाउ यू सेव ऑन योर वेस्ट, राइट, हाउ यू मैनेज योर एम्प्लॉयज, उसके जो यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, हाइड्रो एक्सपेंसेस, सो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट. तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं एंड you want to do something which is already there, you don't want to have a experiment, so you can get into a franchise system. Right. Now again, don't just get into a franchise system, you need to do a due diligence. Call people who are already in the business, ask them how long you've been doing. अगर वो 1 साल करके निकल गया है, something is wrong. Might be some other reason. दूसरा बंदा भी अगर 1 साल करके निकल गया, something is wrong. So do a due diligence, right? And क्योंकि अगर आप किसी अगर बिल्डर के पास भी जाते हैं, who is a builder? Builder is a salesman. So instead of going to a salesman, you should go to a third party and ask them their view. And then you will know. And coming back to your second thing, if it's a manufacturing business, or not necessary manufacturing business, you buy from scratch. Mittal is one of the big, what he does is he buys the dead businesses and brings it back, and brings it, and sometimes people want to sell it. So either it's all up to you. I always recommend that if you have some knowledge about business, buy business which is not a franchise system. Because in franchise, I always believe, you work for others, right? And please. इसमें pros and cons भी है, because franchise is already a proven system. That is a system already there. Some people are very successful in franchise business as well. मुझे पता है, a lot of people are making a lot of money there. So, but again, it depends on what you want to do ultimately. That brings me to my basic question is, should I buy a business? So I should look within myself and talk to realtors and talk to knowledgeable people like you to find out how suited I am to business. For example, gas stations भी हैं, convenience stores भी हैं, there are franchise system as well. आप land में भी invest कर सकते हैं, आप plazas भी खरीद सकते हैं. तो इस पे आप थोड़ा सा हमको बताएं. देखिए, if I go to a client, when I have a consultancy with a potential client, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर, आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या आप उसमें खुद काम करेंगे, या आपने सिर्फ पैसा लिया, उसमें डाला, बिजनेस आपका हो गया, या फिर कोई प्रॉपर्टी आपकी हो गई, एंड यू एक्टिव और पैसिव वाला काम है. सिंपल, राइट? इफ ही सेज दैट, Sernal, आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग, बट आई हैव इनफ मनी एंड आई वांट टू बाय ए प्रॉपर्टी, आई सेड इट मेक्स सेंस. So now what's happening is, even if you're sleeping, your money is making, right? Your money is spinning, वहाँ पे चल रहा है, but again you have that money. So if, for example, you have a plaza which is around 2 million, अगर प्लाजा पूरा चढ़ा हुआ है ना, उसका जो रिटर्न है, say for example if you get a return of around 6%, 5.56% है, तो आमतौर पे ये देखा गया है कि जो 1 मिलियन के पीछे आपकी 6,000 मॉर्गेज है महीने की, तो अगर 2 मिलियन का है, उसमें अगर आप सपोज 30 या 40% डाउन देते भी हैं, अराउंड 8 लाख, तो आपके स्टिल 1.2 मिलियन इज योर मॉर्गेज. सो 1.2 मीन्स यू आर लुकिंग एट अराउंड 7,000 to 8,000 एवरी मंथ यू पे. बिल्कुल. सॉरी टू कट यू ऑफ देयर, आई जस्ट वांटेड टू फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, आपने बोला 6% रिटर्न है, वो हम लोग कैप रेट बोलते हैं.
तो थोड़ा कैप रेट थोड़ा समझा दें व्यूअर्स को तो उनको बेटर समझ में आए कि व्हाट टू लुक फॉर इन कैप रेट का डेफिनेशन क्या है और उसका मतलब क्या है? See, जो cap rate is more like a capitalization, right? So say for example, there are two things. One is this is the operating income and this is the cost of whole business. What is written on it? The second is that this is the income against my equity. That's cash on cash. So there are two separate things. Abhi jaise cap rate which you have mentioned, which is a good question. Right. There is a plaza, and the plaza, there is a rent roll. So rent roll mein kya hota hai ki there are all the money which is coming in, and plus there are some taxes, maintenance, insurance, and expenses are there. So when you have a gross profit minus your operating expenses, whatever is left is your net operating income. So आपकी जो net operating income है, मतलब in short जो आपकी income है खर्चे निकाल के, ठीक है, you divide it by the purchase price, right? A percentage come, you call it cap rate, right? अभी वो cap rate है, people who've been doing these businesses, they understand, you can't get a 6% cap rate in Toronto. As we discussed before, yeah, you can always get a 6%. अगर आप थोड़ा सा दूर चले जाएं, Kitchener में you can get up to 6.5%, cap rate. So at the end of the day, that cap rate doesn't account for your annual debt. Right. So annual debt is more about how much you pay for your mortgage. So these are the basic calculations which we. एक और छोटा सा question I just want to put in. ये जो cap rate आप बता रहे हो, is the cap rate does the cap rate differ for a business only and land and business as well? मतलब उसमें देखिए, you can't work on a cap rate on business only. So if you buy a property, your cap rate, see there are two things again. One of the thing is you buy a plaza, you don't work. Correct. Your cap rate is 6%. You buy a gas station and you're working too. Your cap rate is 11%. Correct. But if you say my cap rate is 5 or 6% and I'm working also, then you're not making, doesn't make sense. So, and sometimes when you buy a business, I've seen 40%, 45, 50%, also come in. So you got to be very careful which calculation to use where. So that what we come in picture, you come in picture. That's why I always say that when you buy a commercial property, make sure, you go to a right person. आपके dental की problem है तो आप कोई neurosurgeon के पास नहीं जा सकते. You have to go to the dentist and they will tell you diagnose it. आपने cap rate के साथ में एक और चीज आपने हमको बताई, वो है cash on cash. If you can just put some little more light on. Yeah, so I just want to understand. See, there are different calculations. So cash on cash is more about when you have a net operating income divided by your how much in money you have put it as a down payment. ठीक है. Right? So because you want to see how much return you are getting it. So because क्या होता है कि देखो at the end of day people अभी जैसे अगर आप कोई residential property भी है, अगर आप 6 लाख की टाउन हाउस ले लेते हैं, 6 लाख का क्या आजकल तो 7 लाख के भी टाउन हाउस आ रहे हैं. अगर आप 700,000 का टाउन हाउस लेते हो और लोग ये सोच के चलते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही खर्चा है, वो है मेरी मॉर्गेज विच इज अराउंड, क्योंकि 7 लाख पे अगर आप 20% भी डालते हो और क्लोजिंग कॉस्ट मिला के 6 लाख की अगर मॉर्गेज भी अगर आपके पास पड़ती है, तो आप ये देख के चलो कि आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 3,000, राइट? प्लस देयर इज अ वैकेंसी. ऐसा तो है नहीं कि आपने बटन दबाया और वो बंदा टेनेंट आ गया, बटन ऑफ किया, एंड प्लस वो तोड़ के अलग जाएगा, आप पेंट अलग करोगे, वो एक खर्चा हो गया, प्लस टैक्स, राइट? तो आपका जो खर्चा टाउन हाउस का ऑलमोस्ट 3500 हो गया, विच पीपल डोंट रियलाइज. दे ऑलवेज से कि मैंने 6 लाख की मेरी मॉर्गेज है, मेरा तो जो खर्चा है वो निकल रहा है, बट दे फॉरगेट टू ऐड दोस थिंग्स. लेकिन जब आप कमर्शियल करते हो, यू ऑलवेज थिंक कि वो जो TMI है, वो जो टैक्सेस है, मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, यू आर एडिंग इट अप. ठीक है. सारे व्यूअर्स को हमने बहुत अच्छी तरह से पूरा कमर्शियल के बारे में जो डिस्कशन हो रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आ रही है, और वो सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एज अ बायर, एज अ सेलर. और आज हमारे पास काफी सारे लिस्टिंग्स भी हैं, जो मेनली सारे लिस्टिंग्स इट्स बेस्ड ऑन कमर्शियल. हाँ जी, सरनल जी, हमारे जो लिस्टिंग्स हैं
उसके बारे में आप कुछ बताएं और बताएं कि कहाँ पे व्हाट इज कौन से लिस्टिंग है, कितने इन्वेस्टमेंट में लोग क्या कर सकते हैं उसमें. आई नो इट्स अ बिग टॉपिक टू कवर बट वी विल क्विकली कवर दैट. श्योर. आई एम श्योर आपके जो व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में होगा कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके हम देखें. सो वी हैव ब्रॉट फ्यू प्रॉपर्टीज जिसके अंदर की हमारे पास वेराइटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं. अगर आपने बिजनेस लेना है, छोटा लेना है, बड़ा लेना है, विद प्रॉपर्टी लेना है, फ्रेंचाइज लेना है, तो वी हैव ऑल द ऑप्शंस कवर्ड. वी विल डिस्कस प्रॉब्ली in the next segment on the next second half probably. But before that, I just want to tell you is that use debt. क्योंकि जो debt होता है वो भी good and bad होता है, right? So always use debt. Debt means go to the bank. Tell them they are waiting for you कि आप पैसा लो और शुरू करो. राइट. तो आपने बैंकर के पास जाओ, नहीं है तो कोई मॉर्गेज स्पेशलिस्ट है उसके पास आप जाएं. और उसके बाद मैं ये बोलता हूं कि जो पिछले 2 साल में हुआ था ना, लोगों ने गलती कहां पे की कि जब मार्केट ऊपर जाती है तब लोग बोलते हैं यार ये तो ऊपर जा रहा है प्राइस, मैं बाई कर लूं. सही बात है, एक टेम्पटेशन है. अभी जो टाइम है कि यू हैव गुड बार्गेन. सो नाउ इट्स अ टाइम यू शुड बाई प्रॉपर्टीज प्रॉब्ली 1 or 2 years बिकॉज यू आर गेटिंग अ गुड रेट. राइट. सो एक वो हो गया. तीसरा है कि डोंट अफ्रेड ऑफ लॉसेस. कई बार हम ये सोचते हैं कि यार मेरे को तो नुकसान हो जाएगा, मैं करता ही नहीं हूं. कई मेरे जैसे बंदे हैं वो सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर और सोचते हैं. कोई तो पीएचडी कर लेता, कोई उससे भी ऊपर निकल जाता है. राइट. सो साल बाद अगर उनको आप मिले तो दूसरे साल भी वही डिस्कशन होगी चाय पे, जिसको चर्चा बोलते हैं. राइट. तो यू गॉट टू लर्न टू टेक एन एक्शन. और जैसे स्टीव जॉब्स है, बिल गेट्स है, डोनाल्ड ट्रंप है, जितने भी लोग हैं इन्होंने पैसा गंवाया है. ये मत सोचें कि वो पैसा हर बारी बनाते हैं. सो दे हैव लॉस्ट इट. एंड दूसरी बात है कि हम ये सोचते हैं कि हम पैसा को बचाएं. जब ये आप देखो, अगर आप कोई पैसा है जो उसको बैंक में डालते रहेंगे वो डेप्रिशिएट ही होगा. बैंक ने चार्जेस लेते रहना आपसे, उसने ग्रो नहीं करना. सो हेज इट. हेजिंग में क्या है, यू सर्कल इट विद इन्वेस्ट इन ऑयल, इन्वेस्ट इन गोल्ड, इन्वेस्ट इन डिफरेंट आपके जो प्लैटर्स हैं. डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. आप डिफरेंट सेक्टर्स में डालें. ऑब्वियसली टेक एजुकेटेड डिसीजन व्हेन यू आर डूइंग दैट. यस. और थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर पैसे बनाने हैं तो. श्योर. थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा. जो भी हमने डिस्कशन किया देर ऑल रिलेटेड. सो आई वुड अभी जैसे यू वांट मी टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी. अभी जैसे मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है. अभी जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं एंड दे वांट टू ब्रिंग देयर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल. राइट. फॉर एग्जांपल जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, अभी एक हमारे पास मीट प्रोसेसिंग प्लांट आया हुआ है इटोबिकोक में, जो डंडास और किपलिंग की जगह है. राइट. और जहां पे किपलिंग जो अपना सबवे स्टेशन भी है और हाई डेंसिटी एरिया है. फ्यूचर में वहां पे मतलब इट्स अ वेरी प्राइम लोकेशन. फ्यूचर में वहां पे काफी कंस्ट्रक्शन होंगी, कॉन्डोज और बनेंगे. अभी तो बने हुए हैं और भी कॉन्डोज वहां बनेंगे. सो फ्यूचर ग्रोथ भी है उसका, जोनिंग भी उसकी अच्छी है. और फिलहाल उसकी जो यूसेज है 40,000 स्क्वायर फुट का एरिया है अप्रोक्सीमेट. 20,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग है. उसके अंदर 5,000 स्क्वायर फुट के तो कूलर हैं, फ्रीजर हैं. उसके नजदीक में ओंटारियो फूड टर्मिनल है. तो अगर आप सामान कहीं से मंगाते भी हो, उसमें लगा के आप उसको फ्रीज करके यू कैन सप्लाई इट. और ऐसे बिजनेस में पोटेंशियल बहुत होता है. बहुत है. देखो वो दे मेक सॉसेजेस, मीट प्रोसेसिंग प्लांट है, ये हाँ बर्गर्स है. रिटेल एरिया 1700 स्क्वायर फुट का तो रिटेल एरिया है. वेयर हाउस है 20,000 स्क्वायर फुट की जगह. मतलब इट्स नॉट ए स्मॉल. राइट इन इटोबिकोक सेंटर में. प्लस उसके अगर आप देखेंगे 2 डॉक इन डोर हैं, 2 ड्राइव इन डोर हैं. तो अगर आप कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर टू ग्रो, दिस इज ए वेरी, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना पिछले 50 साल से चल रहा है, एक ही जगह पे चल रहा है. अगर मैं भी कोई बिजनेस कर रहा हूं है ना, और मेरे को 50 साल, ऐसा तो है नहीं कि 50 साल तक मैं लॉस ही कर रहा हूं. मतलब उसमें कुछ दम होगा तभी तो 50 साल तक वो चला है. उसके बाद क्या होता है कि हर एक जो आदमी ओल्ड भी होता है. तो वही सिचुएशन यहाँ पे हुई है. अभी 50 इयर्स बिजनेस चला है, तो आई एम श्योर ऐसा तो है नहीं कि जब पैदा हुए तो बिजनेस शुरू कर लिया. सो नाउ जो ओनर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट रिटायर, ऑलमोस्ट कई उसमें से एक तो रिटायर भी हो गए हैं. तो इसमें आपको बिजनेस विद
प्रॉपर्टी, इट्स लैंड एंड बिजनेस दोनों हाँ जी। बाकी उसकी और जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट प्राइसिंग वगैरह वो आप सिद्ध और मोहसिन से भी बात कर सकते हैं। एंड बट इट्स अ वेरी गुड जो ऑप्शन है अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना है जो विद प्रॉपर्टी है, और इसमें हम आपको जो फाइनेंसिंग भी करवा देंगे। अगर आपके पास में 25% है, बाकी मैं आपकी फाइनेंसिंग करा दूंगा। उसकी वैल्यू क्या है और डिटेल्स क्या है, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन द नंबर्स। साउंड्स अमेजिंग। एंड इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे प्लाजास भी हैं, गैस स्टेशंस भी हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स भी हैं। You can always call us at 647-892-1234 or you can call Mohsin at 647-786-2829. You can email us at therealtybulls@gmail.com. Give us your feedback about the program. We enjoy as much as I'm sure you would enjoy watching us, and we take your feedback very seriously. हमको पहले प्रोग्राम में भी बहुत सारे फीडबैक मिले थे that we tried to implement. Right. And thank you, Mr. Sanal Singh, for coming to our show. Yep. And it thank was you very a pleasure. much. Thank you very much. And we hope to bring you more information. Yeah, please watching us on every Friday at 7 p.m. Realty with Mohsin and Sid on NJ Digital TV. Please stay tuned. And if there are some specific feedback, or if you want to know some specific things related to real estate, just let us know anytime. Just send us an email, send us a text message. We'll try to cover everything. Thank you, guys. Thank you.